Hello everyone, welcome to another video from Shomus Biology. In this video lecture, we are going to discuss about CSIR NET Life Science Unit 13 Biological Techniques. Basically, in this series of videos, we are discussing about biology math problems from different CSIR NET units. And in this lecture also, we are going to solve some of the example math problems from Unit 13 of CSIR NET Life Science syllabus, and that is biological techniques syllabus. So from biological techniques, it's not guaranteed that you're going to get a question from this topic that we're going to discuss, but I'm going to show you this chapter is not that difficult. You can solve this question. You can get this question from either in Unit 13 or from as Unit 11, Unit 1, sorry. Alright, so now we are going to solve a problem from half-life, that is from Unit 13, biological techniques. So problem from half-life, it can be provided from Unit 13 as well as from Unit 1. The half-life of a radioactive substance is 20 years. They can also give you this question like half-life of a drug XYZ anything of 20 years. If a sample has an activity of 400 BQ, BQ means becquerel, basically this is a unit to calculate radioactivity. So if the sample has an activity of 400 BQ, what is the activity after activity 60 years ago? Sorry. So basically in this kind of problems, they either ask you to find out the half-life, either they ask you to find out the radioactivity after X number of years, or they may ask you to find radioactivity X years ago. So in this case, the question asked radioactivity 60 years ago. Currently, the radioactivity is 20 years. 20 years, so half-life is 20 years and the radioactivity is 400 BQ. So this is the idea. Now the rule of half-life means what? Basically half-life of radioactive substance means the radioactivity of that substance 50% of it is gone by that time. 20 years taken for the 50% of all the substance radioactivity to be reduced in half. That is the concept of half-life. So what we in very simple terms, not in the complicated terms, but in very simple terms. So what we can clearly see, in 60 years there will be 3 times the radioactive decay will continue with the calculation of the half-life. So with every 20 years it will reduce, and thus 3 times it will reduce in half. So if it reduces in half 3 times, so 2 to the power 3 should be our value that we should keep in our mind. Remember, so we start with first year, after 20 year half reduced, then again 20 year, again half of that reduced, again last 20 year half of the remaining one reduced. So this is what's going to happen. So we can count it only with the formula 2 to the power n. N means the number of times. So here how many times? 3 times, because there are 20 years is the half-life and 60 years is what we should calculate for. So 60 divided by 20 divide करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 to the power 3 8. तो ये है फैक्टर, और ये फैक्टर से जो है रेडियोएक्टिविटी क्या होना चाहिए, 60 साल पहले है तो रेडियोएक्टिविटी ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि रेडियोएक्टिविटी धीरे धीरे डीके होता है, कम होने लगता है, ना तो बढ़ता है. तो इसीलिए जो फैक्टर 8 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एग्जिस्टिंग रेडियोएक्टिविटी जो 400 BQ है उससे, और हमें मिल जाएगा 3200 BQ. 3200 BQ हो जाएगा इसका एक्चुअल रेडियो एक्टिविटी 60 ईयर्स होगा. देखो यहाँ पे ऑप्शन में तो अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ पे डी में लिख देता हूँ 3200. तो 3200 BQ रेडियो एक्टिविटी रहेगा 60 साल पहले उसी सब्सटेंस का जो 20 साल में हाफ लाइफ उसका है, उस हिसाब से वो रिड्यूस हो रहा है, डीके हो रहा है. So let's move to the next problem. This is a problem from Beer-Lambert law. In a solution, if a solution has an absorbance of 0.5 at a wavelength of 500 nanometer and a path length of 1 centimeter, what is the concentration on the absorbing species if its molecular extinction coefficient at this wavelength is 10,000 per mole per centimeter, or 10,000 mole inverse centimeter inverse. So basically this is a question from Beer-Lambert law. If you don't know what Beer-Lambert law is, you cannot answer this question, but it's a very important law. You need to understand this for many other, any kind of CSIR NET life science or any kind of life science national level examination. So what we know about this law is that absorbance can be calculated based on this formula epsilon CL. Okay, epsilon into C into L. So epsilon is the molar extinction coefficient, the value is provided 10,000. C is the concentration
जो कि हमें पता करना है यहाँ पर। L इज द लेंथ, 1 सेंटीमीटर इज द लेंथ। एब्जॉर्बेंस भी दिया गया है 0.5, एब्जॉर्बेंस की जो कोई यूनिट नहीं है, ऐसे 0.5 विदाउट एनी यूनिट। तो ये ऐसा आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या ढूंढना है, कंसेंट्रेशन ढूंढना है, बहुत आसान है। सो कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाई 10,000, ओके। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 5, और ये नीचे ओके। सो 1 0 विल बी इंक्रीज्ड, एक 0 बढ़ जाएगा। तो 5 डिवाइडेड बाई ये है, तो 5 इंटू 10⁻⁻5 है ना, ये हो जाता है आपका कंसेंट्रेशन क्या, मोल। 5 इंटू 10⁻⁻5। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी 5 इंटू 10⁻⁻5 है। तो यही आपके लिए ऑप्शन है, राइट। सो सिंपल। ये क्वेश्चन जो है अलग अलग एंगल से किया जाता है। कभी कंसेंट्रेशन ढूंढना होता है, कभी मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट ढूंढना होता है, कभी लेंथ ढूंढना होता है। लेंथ जनरली नहीं होता है, क्योंकि लेंथ तो इफ नॉट टोल्ड इट्स ऑलवेज एडवाइज टू पिक इट एज 1 सेंटीमीटर, क्योंकि वही क्यूवेट का लेंथ होता है, पाथ होता है। कभी कभी एब्जॉर्बेंस ढूंढने की क्वेश्चंस दिया जाता है, कभी कभी कंसंट्रेशन ढूंढने की क्वेश्चंस दिया जाता है, मगर एसेंशियली क्वेश्चन यही रहता है। सो दैट इज something related to the Beer-Lambert law. I believe you have a clear understanding of this lecture. वीडियो ऐसा ही अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम अगर आपको सीखना है, समझना है, तो वो हमारे कोचिंग ऑनलाइन पेड प्रोग्राम में अवेलेबल है। और ऐसे अगर प्रैक्टिस करना है खुद के लिए, इसके लिए बुक सेट हमारे पास अवेलेबल है। यू कैन गेट एनी ऑफ दैट. The details are there in the links in the description also. The number is shown here in this video. So you can always choose that. It's going to help you. So that's all about CSIR NET Life Science Unit 13 math problems. I believe this helps you. Thank you. Bye. लगा वीडियो, होपफुली यू लाइक द वीडियो। हमें भी अच्छा लग रहा था एक्सप्लेन करते हुए, मगर ये वीडियो बड़ा नहीं बना सकते इतने, क्योंकि इट्स अ पेड प्रोडक्ट जो कि हम अपने ऑनलाइन कोचिंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। डिटेल एनालिसिस ऑफ वीडियोस फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स ऑफ ऑल द CSIR NET units, all the 13 units of CSIR NET examination. But that's not the end of the road. If you like to prepare on your own and you're not one of our students, then you still have one option, that is this book, Biomath Handbook. But this book is available along with another 4 books. One is this book. So this Biomath Handbook, you know, it is filled with the problems and answer explanation. This is I think this is 231 pages book, and it includes all the important questions from different chapters of CSIR NET, biology, math problems, all the analytical and mathematical problems book. This is there for you, and but this is available along with this book. This is the 11 CSIR NET question paper answer explanation. 540 part B question and 820 part C questions are completely explained in this particular book for the previous year CSIR NET papers. So these 2 books are there. Along with that, you have our very own and bestseller Blueprint of Life Science book, 3 green book, yellow book and red colored book as a study material for CSIR NET. All these 5 books comes together at a price of 3,900 rupees, and including the delivery charge. So you can get these books at your place and can start your preparation विदाउट ज्वाइनिंग आवर कोचिंग। और अगर रेगुलर गाइडेंस चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस चाहिए मुझसे रेगुलरली इन टच एंड एक्सप्लेनेशन, मोटिवेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, इन दैट केस फॉर अ रेगुलर क्लासेस एंड डाउट क्लियरिंग आप हमारे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम, 6 महीने के लिए प्रोग्राम। दिस इज अ 6 month कोर्स with a long term validity, so you can get to know all the details about our coaching from the description as well as the details here in you can easily get from the number that is there in this screen. You can WhatsApp this number to get all the details, and also visit our website www.shomusbiology.com. Thank you very much. Bye.